एक जिस्मानी और एक रूहानी। Uno de la carne y otro del espíritu. किस चीज की जरूरत है? ¿Qué lo queremos nosotros? जिस्मानी बीमारियां फानी है क्योंकि बदन खत्म हो जाने वाला है। Porque la enfermedad de la cuerpo es temporal y porque la cuerpo vas a quedar aquí. हमेशा की जिंदगी आसमान पर है, Porque la जिसके लिए vida हमें अपने आप को तैयार करना है। y la vida prometida con nosotros está en el cielo de Dios. खुदावंद आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। Dios está con nosotros aquí mismo también. रोगने बिलसान आज भी मौजूद है। Hoy también hay sanidad de Dios. यिर्मयाह क्या कहता है कि क्या वहाँ रोगने बलसान नहीं? Jeremiah dice que no hay ningún médico ahí. क्या आज वलेंसिया की कलीसिया में, पाकिस्तान की कलीसिया में, स्पेन की कलीसिया में रोगने बलसान नहीं? Que hoy no existe Jesús dentro de nosotros, en la iglesia de nosotros, o la iglesia de Valencia, o la iglesia de España, no existe Jesús Cristo que puede sanar a nosotros. फिर क्यों बिन्नत कौम ये कलीसिया शिफा नहीं पाती? Porque no estamos sanados todavía. रोजाना दुआएं करते हैं, Oramos todos los días, दुआ करते हैं, todos los días. दुआ करते हैं, Oramos. याकूब क्या कहता है? ¿Qué dice तुम James? मांगते हो लेकिन पाते नहीं। ¿Qué dice? Que vosotros pides pero no lo recibes. जुबान से अदा करते हैं। Porque pidemos solo de la boca. हम यीशु को अपना निजात देता जुबान से मांगते हैं। Solo aceptamos nosotros Salvador con la palabra, con la boca solo. अगर हम दिल से खुदावंद Si को अपना aceptamos निजात con देना la मांगे, amante, con la corazón. तो बिन्नत कौम की शिफा मौजूद है। Y nuestra sanidad existe porque si aceptamos Jesús Cristo con la corazón. उस औरत का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में। Hay una 12 साल से जिसको खून जारी था, hay una mujer que salía sangre por 12 años. यीशु गुजर रहा था। Jesús estaba pasando de ahí. उसने कहा कि मैं इसकी पोशाक को Dice, ahora छूऊंगी। si toco su ropa solo. उस गुनाह की हालत में उसने यीशु के आगे जाना नहीं चाहा। Él no quería adelantar, enfrentarse a Jesús porque existía una enfermedad que no quería enfrentarse a Jesús. अपनी बीमारी से शर्मिंदा थी, Porque tenía miedo de su enfermedad, que gente piensa mal por ella. लेकिन जुबान से नहीं दिल से कबूल किया कि अगर मैं इसको छू लूंगी तो मैं शिफा पा No lo जाऊंगी। dice de sola boca, que pues, si lo toco lo voy a estar sanado, pero excepto Jesús Cristo con su corazón, si yo le toco solo Jesús Cristo, estaré sanado. उसने शिफा पा ली, Y ella estaba sanado. मौजूद है। A Dios existe y está presente aquí. खुदावंद यकसा है। Y Él existe y Él siempre está igual. खुदावंद जो कल आज और अब तक यकसा खुदा El है। Dios es mismo de ayer, hoy y mañana. खुदावंद ला तब्दील है। Él nunca cambias. खुदावंद का कलाम ला तब्दील है। Su palabra nunca cambias. खुदावंद अपने लोगों से आज भी कलाम करता है। Dios hablas con su gente hoy también. खुदा ने जो कलाम यिर्मयाह से किया, La palabra que ha dado Jeremiah a Dios, नोहा जिसको रोने वाला नबी भी कहा जाता है, वो अपनी बिन्नत के लिए, अपनी कौम के लिए आहोनाला करता, रोता है कि मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती। क्योंकि लोग वो कलीसिया खुदा से दूर होती जा रही थी। खुदावंद को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात नागवार गुजरती है, और वो क्या है? नाफरमानी। a Dios, ¿por qué no estaba sanado el pueblo de Dios? Porque estaban lejos de Dios, porque Dios único que no lo quiere es desobediencia, por si no lo queremos en la palabra de Dios. Si vamos contra la palabra y Él es contra de nosotros. आज भी खुदा मौजूद है। Hoy también existe Dios. वही खुदा जो सारपत की बेवा के साथ था। El mismo Dios que estaba con la Laya. अगर एलिया 17वें बाब का मुताला करें तो वहां पर सारपत की बेवा का जिक्र है। Hay una mujer que estaba sin marido. उसने कहा, एलिया उसे कहता है कि तू क्या कर मेरे लिए एक फुलका बनाकर ले आ। वो कहती है कि मेरे पास एक वक्त का खाना है, रोटी है, मुझको पकाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। Dice la mujer que no tenía marido y dice a ella, tráigame un pan. Y ella dice, solo tengo para uno. Y si comemos yo y mi hijo y luego vamos a morir. एलिया उससे कहता है, Y Alaya dice, मेरे लिए
रोटी बनाकर ले आ, Dice la profeta de Dios, le dice a la mujer, tráigame este pan a mí. क्योंकि इस्राएल का खुदा तुझे अता करेगा। Porque la Dios de Israel te va a dar. वो यकीन कर लेती है, Y él coge la palabra de Dios. अपने दिल से ईमान ले आती है, Y coge la fe con su corazón. उससे कहती है कि तेरा खुदा जो करेगा वो ठीक करेगा, और ना उसकी मटकी में से आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। Y dice la palabra de Dios que hasta que estaba allá con ella, nunca terminó ni pan, ni harina, ni aceite de su casa. उसके जहन में क्या बात थी कि मेरे पास एक वक्त का खाना है, Él que pensaba que solo tenía harina para un tiempo solo. कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। Vamos a comer esta harina y luego vamos a morir. लेकिन जब उसने खुदा के बंदा की बात को सुना, Y cuando lo cogió la palabra del profeta de Dios खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की, y coge la obediencia de palabra de Dios, उसने जिंदगी को हासिल कर लिया। lo cogió la vida. उसके दरमियान जिंदगी की रोटी खुदा की सूरत में मौजूद आ गई। Y ahí ya había pan de la vida en la cara de su profeta. आज बिन्नते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? Porque hoy la pueblo de Dios no está sanado enteramente. यकूब चौथे बाब का मुताला करें, Si तो vamos वहां a पर leer James 4, क्यों शिफा नहीं पाती? Porque no क्योंकि estamos sanados मांगते todavía. हैं और पाते नहीं। que pidemos y no recibimos. मत्ती क्या कहता है? Mateo, ¿qué dices? मांगो तो तुमको Dice, दिया si जाएगा, lo pides, te voy a dar. क्योंकि हम मांगते हैं लेकिन बुरी नीयत के साथ, Porque- ईमान के साथ नहीं। Porque no pidemos con la fe que debía estamos pidiendo. और इसीलिए खुदावंद अपने बंदा योएल की मार्फत में यह सिखाता है कि दुआ मांगो और किस तरीके से मांगनी है दुआ। कहता है कि अपने पूरे दिल से जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। खुदा क्या कह रहा है? अगर शिफा चाहिए तो मेरी तरफ रुजू लेके आओ। योएल दूसरा बाब, El libro de Joel, दूसरा बाब 13 है। ese es Joel, ¿no? Joel. Segundo, y su frase 13. किस तरह से हासिल करना है? मत्ती क्या कह रहा है? मांगो तो तुमको मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? क्योंकि याकूब ने कहा तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, दिल से हसद जाता नहीं, किसी दूसरे को माफ कर नहीं सकते। Porque James dice que no perdonamos a otros, porque no pidemos con el corazón limpio. Pidemos siempre tienes algo pecado dentro de nosotros. Por esto no lo recibimos. और योएल क्या सिखा रहा है कि किस तरह से हासिल कर सकते हो? Y Joel, ¿qué dices? ¿Cómo lo podemos recibir este? कहता है, और अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिलों को चाक करो। No tenemos que limpiar nuestro vestido, pero la corazón es de nosotros. खुदा की तरफ मुतवज्जा हो। Tenemos que coger a Dios solo. वो रहीम और मेहरबान और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। उसकी तरफ रुजू लेके आए सच्चे दिल के साथ, क्योंकि खुदावंद क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। Y tenemos que volverse a Dios solo. Y si volvemos a Dios, Él va a dar todos nosotros que lo queremos nosotros. Porque la palabra de Dios dice कि मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, सच्चाई के साथ मेरे हुक्म si पर अमल करो। estamos con la palabra de Dios y Él va a bendecir nuestro pan y nuestro agua y nunca faltará a nosotros esto. खुदावंद पिछली बरसात की मानद बरसात करेगा। Y vas a caer agua como le cayó el año pasado. खुदावंद आज भी मौजूद है। Hoy también existe la Dios. आपकी बरकत अबलीस रोकना चाहता है। Vosotros bendiciones quieres parar la demonio. आप खुदावंद के हुजूर झुके तो वो कुव्वत बख्शेगा कि आप अबलीस का मुकाबला कर सके। Y si vamos a enfrentarle a Dios y pidemos a Él su honor, su poder, y Él va a dar a nosotros poder que podemos enfrentar la demonio, la Satán. खुदावंद
आपके दरमियान मौजूद है। Dios está con nosotros aquí mismo. खुदावंद हमारा रुपया पैसा नहीं चाहता, Dios no quiere nuestro dinero. खुदावंद हमारा पाकीज़ा दिल चाहता है। Dios no quiere nuestro limpio corazón solo. अपनी शिफा के लिए Por nuestra sanidad पाकीज़ा दिल के साथ खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। tenemos que estar con el limpio corazón en frente de Dios. यीशु की फ्रेंचाइज ना खोलें, No tenemos que abrir un franquicia de Dios para que lo podamos vender Jesús. सिर्फ जुबान से उसका इकरार ना करें। No tenemos que dar la gracia solo con la boca. अबलीस भी जुबान से यीशु का इकरार करता है, Porque Satán también dice Jesús es hijo de Dios. वो जानता है लेकिन कबूल नहीं करता। Él lo sabes que Jesús es hijo de Dios, pero no lo aceptas porque si aceptas ya no terminas todos. उसको पता है कि उसका वक्त आने वाला है। Él lo sabe, su tiempo está muy cerca. यीशु को कहता है कि तू वक्त से पहले हमें निकालने आ गया। Porque demonios llaman Jesús, tú has venido antes del tiempo para sacar a nosotros de aquí. फिर आज खुदा जिसको हम खुदा का मकदस कहते हैं, अबलीस क्यों बसेरा किए हुए हैं इन बदलों में? ¿Por qué demonios está dentro de nuestro cuerpo? Porque es un templo de Dios nuestro cuerpo. खुदावंद से मिन्नत करें, Nosotros tenemos que pedir a Dios खुदावंद ईमान की मजबूती अता करे। que a Dios le da a nosotros la fe. हमारा ईमान जरूर है, Nosotros tenemos fe, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा सुराख रह जाता है, जिसकी वजह से कश्ती में पानी आता और उसको डुबो देता है। porque hay algún agujero, como lo tienes a veces en la barco, y cuando hay agujero entra agua y lo caiga en la agua la barco. अपने अपने ज़हनों को तैयार करें, Prepara tu vuestro mente para Dios. खुदावंद से मांगे, खुदावंद Pide a मौजूद Dios. है, A Dios existe, Dios está presente aquí mismo. खुदावंद आपके साथ है। Dios está con vosotros. खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमें पाकीज़ा दिल अता कर। Pide a Dios que das a nosotros un corazón limpio. मैं खुदावंद के खादमीन से कहूँगा कि आए सारे मिलकर के दुआ करें। Voy a llamarse la hombres de Dios que viene enfrente y orar para la gente. आज हमें शिफा की जरूरत है, Hoy le necesitamos nuestra sanidad, सिर्फ बदनी नहीं, no solo de cuerpo, बदनी शिफा की नहीं, solo हमें no de रूहानी cuerpo, शिफा की pero जरूरत del है espíritu also. कि खुदावंद हमारी रूहों की निजात हासिल। Que a Dios acepta nuestro hoy la espíritu de nosotros también. ये जमीन हमारा वतन नहीं है, Este mundo no es nuestro mundo. हमें अपने आसमानी मकान के लिए अपने आप को तैयार Nosotros करना tenemos que है। preparar a nosotros la piso que tienes en el cielo para nosotros, la Jesús. आए दुआ मांगे, Vamos a orar. खुदावंद ऐसा कदूस Glory to God. Judaban que naam ko jilaro. Gloria a Dios. Shall we stand on our feet Podemos levantar a nuestro pie. as we pray? Vamos a orar. खुदावंद मौजूद है। Father, in the name of Jesus, Amen. I'm going to pray in English. Voy a orarse en inglés. The Holy Ghost will let you know what I'm preaching about. El Espíritu Santo vas a decir que estoy pidiendo para vosotros. Because you understand all languages. Porque el Espíritu de Dios aprendes, tú entiendes todos los idiomas en el mundo. Hallelujah. Aleluya. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Yes, Lord God. Lord Jesus of Nazareth, Amen. I lift your people to your holy hand. Amen. I declare, Lord, anyone that has pains, because the Bible declares, by his stripe we are healed. Amen. Receive your healing in the name of Jesus. Heavenly Father, I call upon you this day, by the power that raised Jesus from death. I pray that same power touch your body, soul, and spirit for a great revival in the name of Jesus. I release the fire of God upon you, the power of the Holy Spirit upon you. Receive it in the name of Jesus. Thank you, power of God. Amen. In Jesus' name we are praying. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah.